समस्त गुड इवनिंग। ओके, आज हम पढ़िया चैप्टर 3 ज्योग्राफी, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट थिंग, drainage that links to the water, that is the rivers. And here river or the river system, that means if you are drawing a river, let it be a river, then there are different tributaries of the river. There are different tributaries, those join to the main river and give its water. Okay, these are the tributaries, whereas these are the tributaries. Okay, and here at the lower bank, of the river जेतल तार lower bank को आसे plain land पाखापाखि एरिया को आसे, then river that distributes it water, और river जो main river अच्छे main river water खाली होगा। अब सही केस रे जो river गुड़ा को water खाली कला, then these rivers they actually distributes the main river. What these are called as the distributary rivers. Okay, distributary rivers, and these tributaries and these distributaries and this main channel, okay, comprehensively or compositely called as the river system. Okay, so this is a river system, and this is also called as, this river system is also called as the drainage system. Okay, this is the drainage system, and here river along with its bank, okay, called as the river basin. ताको कौन कहूचे ना river basin कहूचे। एथि बात क्लियर हे गेला। Now going to the drainage system of India. India रे जहाँ river system से ताको बढ़िया। तो first of all, India रे जहाँ river अच्छे, okay, those rivers have been divided into two types. First one, Himalayan rivers. Second one, the peninsular rivers. Meaning सहज बा इजी कथा होचे आज जो सब रिवर गुडा हिमालय बेल्ट रु बाहर छे, दिस रीजन ए जो रीजन गुडा रु बाहर सब जाको हिमालय रु बाहर छे, आकम कहले हिमालयन रिवर्स कहले। एंड जोटा हमर जोटा पेनिनसुलर ग्राउंड अछि द साउथ ऑफ इंडिया असला जनरली, दिस आर द पेनिनसुलर, ओके, रिवर्स ऑफ इंडिया। तापुरा गोटे कथा रहला, ओके, हियर इज ए फिगर दैट a highland or an upland. Okay, this is an upland or the highland which divides two rivers or two river basins. दीटा river basin की जो highland टा divide कला ताका में कहले water divide, ता कहले water divide, were clear. Okay, now going to the chapter and going through the book. एक book भितरु जिबा, समस्त पाखरे book काढी के रखो, जहा मु कहूची समस्त फॉलो करिवे। ओके, बुक रे जाछि जेतु एग्जाम पाखर अछि, बुक रु कहूचे टिके मु वर्ड को फोकस करिए समस्त। ओके, द टर्म ड्रेनेज describes the river system of an area. Okay, and here if we are going to look at the physical map, then there are small streams flowing from different directions come together to form a main river. What a main river form करे different small streams asla एकाठी हला, ताका हम कहले tributary which tributes their water to the main river. Next one, there are distributaries at the lower top, and they are seen. These tributaries are generally formed at the upper slopes. Upper slope रे form of tributary देखा जीवो, जोड़ा कि main river को water देइछि। Lower slope रे near to the plain area, delta area, they are formed the distributaries. Okay, so that which ultimately drains into a large water body. Okay, जो माने water टा को दे देले, such as a lake or a sea or an ocean में से फाइनली फॉल हेले। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, गोटे सिंगल रिवर सिस्टम रो जेतिक एरिया ता थ्रू रे ड्रेन हे पारला, जेतिक एरिया रो वाटर खाली हे कि ओशन में कि जोडी फॉल हला, देन द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज बेसिन, दैट इज कॉल्ड एज ए ड्रेनेज बेसिन और द रिवर बेसिन आई सेड। ओके, नेक्स्ट वन, ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन, इफ यू आर लुकिंग इनटू दिस काइंड ऑफ मैप, जदि हम ए मैप को देखु जे, then a highland or an upland, okay, such as an elevated area or a mountain, elevated कले उठी की थिबा एरिया जो गुडा आसला बा माउंटेन गुडा आसला, or an upland which separates two drainage basin, दीटा drainage basin की बा river basin की जे अलग अलग कला ताको हम कहले water divide, were very clear. Okay, next one, so what is a water divide? Answer asla that an elevated area
or an upland or the mountain which divides two river systems or drainage systems is called as the water divide. Okay, next one, drainage systems of India. Okay, and here the point, single point, that is the world's largest drainage basin is of the Amazon river. Amazon river asला जोड़ा साउथ अमेरिका रे प्रेजेंट अछि नियर अबाउट ब्राजिल मैप रे आगु बहुत थोर देखैछि. ओके, Amazon river वाला लार्जेस्ट the river basin or the drainage basin in the world. Okay, next one, drainage systems of India or in India. So accordingly, in the Indian rivers are divided into major groups. First one, the Himalayan rivers, and the second one, the peninsular rivers. Clear? Okay, apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. Okay, most of the Himalayan rivers, हमें भी इससे वार हो जाऊँचे. Then this is or these are the Himalayan rivers. Himalayan rivers generally seen in the northern half of India, and these rivers are first one. These are perennial rivers. Okay, what are perennial rivers? The river, okay, which flows throughout the year. That is, they have water. They have their water throughout the year are called as the perennial rivers or perennial rivers. बता हम चिरस्रोता कहूचे जोड़ा वर्ष जाक कोन दबो वाटर ता भीतर रहइबो काहे कि रहइबो आंसर आसले या जे that some let it be in rainy season they are actually full, and in case of summer season the Himalayan ice caps or the Himalayan snow or the ice that melts and fill up the river. So in summer season water be available hobo, rainy season water be available hobo. That is the best thing about the perennial river. It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from the rains as well as from the melted snow from the lofty mountains or the high mountains. Were clear? The two major Himalayan rivers, that is, okay, Indus, the Brahmaputra, they originate from the north of the mountain ranges. Agu padhiba eta. Okay, and they have cut through the mountains. Okay, making gorges. What देखिए बुझिया दे गोटे छोटो वार्ड आसला. Here given the gorges. So what are gorges कौन आसला? ना से गोटे रिवर जब पास करी गला माउंटेन आउ माउंटेन भीतर पास करी गला और सिंगल माउंटेन भीतर कट थ्रू करी गला, देन इट फॉर्म्स ए सडन डेप्थ वैली. गोटे सडन रफ डेप्थ वैली फॉर्म हबो आउ सेही डेप्थ वैली के हम कहले रिवर रो गॉर्ज कहले. वी आर वेरी क्लियर. ओके, सो गॉर्ज फॉर्म कले को माने फॉर्म कले गॉर्ज गुडा को ना मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स दे फॉर्म गॉर्जेस. काहे कि ना लॉफ्टी माउंटेन्स थ्रू रे कट थ्रू करी गले तो सेही बोधे कोन कले gorges form kale. The Himalayan rivers have long courses for their source to the sea. So as the source to the sea is quite farther, जेतु बहुत दूर रे अछि सेति भी कहम ना एमानर कोर्स गुडा को बा कोस्ट गुडा को और ताकर सुबन जो डिस्टेंस होइला रिवर रो लेंथ आसला दैट इज क्वाइट लॉन्गर. रिवर रो लेंथ अधिक हबो बट पेरेनियल को छाड़ला पर जो पेनिनसुलर रिवर आसला साउथ इंडिया रे देखाउछि जनरली साउदर्न हाफ रे देखाउछि. एमाने कहबे एमानक पाखरे ओशन बा सी अछि से जो मान लेंथ कम हो ना शॉर्टर लेंथ हो देन कंपेयर टू द कसला देन कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स को कंपैरिजन में एमाने शॉर्टर लेंथ हेबे एमाने हेले लॉन्गर लेंथ हेले एमाने पेरेनियल हेले. दीज आर सीजनल रिवर्स. ओके, सीजन अनुसार रेनी सीजन वाटर अवेलेबल हो समहाउ समर सीजन वाटर अवेलेबल हो नाही. और विजुअल दे परफॉर्म इंटेंसिव कोरोजनल और एरोजनल एक्टिविटी. ए जो वाटर गुडा रहला बा रिवर गुडा रहला एमाने इंटेंसिव कहले हेवी अमाउंट रे एरोजन करेले सॉइल एरोजन अधिक हबो. सेहि भाई जहां भी सिल्ट हैला क्ले हैला जहां भी से कोन एरोडेड सॉइल आसला ताको एरोड जेतेबे कले से माने आनि के आसले एवं कोले रिवर जेतेबे एटा पाखापाखी ओशन रे पहुंचला नियर अबाउट सी रे पहुंचला लो लैंड रे पहुंचला देन दे फॉर्म द काइंड ऑफ प्लेन लैंड एंड आल्सो दे फॉर्म द काइंड ऑफ डेल्टास. डेल्टा फॉर्म हबो नियर टू द सी माउथ पाखापाखी जगह रे डेल्टा फॉर्म हबो. वर्ड बुझियला लिखाल से एरोजनल एक्टिविटीज इन देयर अपर कोर्सेस एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेस. जोटा मिडिल कोर्स हो नॉन लोअर कोर्स हो इट पढिया इन द मिडिल एंड लोअर कोर्सेस. ओके, दीज रिवर्स फॉर्म meanders, oxbolecs and many other depositional features in their flood plains. फ्लड प्लेन रे डिपोजिशनल थिंग फॉर्म होला जाजको डेल्टा फॉर्म होला. आ गोटे छोट वाला आसला मिएंडर फॉर्म हबो. मिएंडर कोठी फॉर्म हबो वाटर मिएंडर्स. मिएंडर कोन आसला ना व्हेन रिवर फ्लोज जेतले रिवर फ्लो करिवो एंड व्हेन इट रिचेस टू ए प्लेन लैंड जेतले प्लेन लैंड पाखा के एरिया रे पहुंचीबो
then a river that actually get the kind of very soft soils एगुड़ा बहुत किसी soft soil पाइबो से जो river जो movement हबो that is in a loop form river टा loop form रे जीवो तो जब loop form रे river जीवो मित्या loop हे के जीवो then these bends ये जो bend आसला से bend को हम कौन कहली ना these are called as the meanders okay these bends are called as the meanders as here formed एठी किसी meander रो shape हम करे छे जो loop गुडा आसला these turnings or these bends ताकन meander को तो से meander place रे जितले higher amount रे कोन आसला ना deposition of silt होला बोले बुझिए कोन आसला जे जितले heavy amount रे deposition होला एटा plain land टा river तार सब एरिया क्रॉस कर देछि प्रबल एरोजन एक्टिविटी करैछि जाजु सैंड बहुत आछि आ जाजु सैंड जितले अधिक जो डिपोजिट होला ओके एट द टर्निंग रे पाखा पाखी जगह रे जितले अधिक सैंड डिपोजिट हबो नियर अबाउट दिस एरिया okay then it will cut off and the river bends to another region leaving this particular area गोटे एमिति एरिया छाडिबो जो एरिया का असला ना वाटर कंटेंट हबो but this is how in a shape that is called as the oxbow okay oxbow lake or the horseshoe shaped lake what बुझियला एबो हमर एटा अवश्य सेमते किछ नाही एग्जाम रे पढला भलिया कारण बुक रे सेमते अवेलेबल नाही but oxbow lake काई फॉर्म होची आंसर होची due to the formation of the river loops or the meanders at the plain area रे river loop form होला meander form होबो heavy erosion ଆଉ heavy deposition देले असला deposition जो कोन होबो ना बेले बेलेटा मेन river टा किछि पार्ट को कट ऑफ कर दबो छाडी के एटा अलग जगह रे बेंड हेकी पळेबो and this left area will be a lake called as the oxbow lake or the horseshoe shaped lake what clear okay next one here is a given figure okay first of all these are the upper course this is the middle course this is the lower course of a river system or river area these are the tributaries these are the distributaries okay so when they move from the upper slope they are quite faster or here the movement of water is faster okay they form the kind of okay rift systems or here water current is very speed water current एटी अधिक अछि ता तळକୁ आसला परे मोशन बा तार स्पीड आस्ते आस्ते कमियो वेलोसिटी कमियो वाटर रो and water flows through the rivers forming the meanders in the middle course or the lower course रे फॉर्म होबो lower course रे हेवी डिपोजिशन होबो then river distributes main river रो बहुत किछि डिस्ट्रीब्यूटर बाहरिबो आ जोटा कोन देखा जिवो ना ट्रायंगुलर शेप रे देखा जिवो and it looks like the एटा काहला देखा जिवो looks like the legs of birds or bird or leg भला देखा जाए कंपैरिजन को आ जाए and here these are called the delta region delta means triangular region okay where the distributaries are forming the heavier deposition of wax and these are forming the fertile plains okay तो डेल्टा टा सबटु बड़ फर्टाइल प्लेन होबो इंडिया रो जोटा सबटु बड़ डेल्टा होचे दैट इज कॉल्ड एज द सुंदरबन डेल्टा ओके इन वेस्ट बंगाल रे ए प्लेस रो अछि ओके गंगा रिवर जो फॉर्म होछि here it is the Sundarban delta in also present in Bangladesh present ଅଛି India रे present ଅଛି okay next one a large number of peninsular rivers are seasonal first point हमें differentiation काढुचे peninsular river peninsular area रे बाहरले southern half of India रे बाहरले first point second point they are seasonal that means their flow is dependent on the rainfall during the dry season even the large rivers have reduced the flow of water in their channels large river में water channel सेमती flow करिवे नाही next on the peninsular rivers have shorter and shallower courses shorter course अछि छोटो course अछि काहे कि ना एठी ओसम पाखा पाखी अछि बा river बा सॉरी सी गुडा को पाखा पाखी बे ऑफ बेंगल आसला जा आसला एपटे आरबांसी आसला कि जा आसला सो गुडा सब पाखे अछि सो ओरिजिनिंग प्लेस रु आसला ना टू देयर रीचिंग प्लेस एठी नियर अबाउट अछि तो सेठी में आसला ना कोर्स छोटो and आसला आल्सो दे आर नॉट सो डीपर दैट इज shallow whereas these are the deepest rivers of India like the Indus, Brahmaputra and then comes the Ganga. Okay, these are deeper. The Himalayan rivers are deeper and here these are shallow. Okay, next one, the peninsular rivers have the shallower courses as shorter courses compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. There are also let it be some rivers okay for example here is Narmada here is the river Narmada and another river okay that is Tapti
Okay, in your book it is written as Tapti also, Tapti or Tapti. These are the rivers, okay, flowing westward. Okay, so these are the western flowing rivers, whereas these rivers are mostly the eastern flowing rivers. Okay, these are the eastern or eastward flowing rivers. Okay, so मिडिल ये जो नर्मदा आसला ताप्ती आसला एमान बाहरले गोटे सेंट्रल हाईलैंड रो बाहरले सातपुरा ये जो हिल्स अछि सातपुरा रो पाखा पाखी एरिया आसला इन हिल रोड बाहरले सातपुरा आसला एपटे माउंटेन रेंजेस अछि नर्मदा ताप्ती भितरे सातपुरा अछि नर्मदा ऊपर विंध्य माउंटेन्स अछि बुझले राजस्थान साइड आरावली माउंटेन रेंजेस अछि तापर नेक्स्ट आसला जो महानदी बाहर सेटा अछि अमरकंटक प्लाटेउ अछि नर्मदा बाहर से अमरकंटक हिल रो बाहर अछि ओके আমি যাওতে উপরু যাচ্ছে এপটে আসলা ঝাড়খণ্ডে কিছু কিছু প্লেস আছে ছোটনাপুর প্লাটেউ আসলা তাতরক আসলা ওকে এপটে ছোটনাপুর जो लास्ट पार्ट আছে তারপর বুন্দেলখন্ড বগেলখন্ড এমনি কইলে এটা আমরা পড়ি যাবে ওকে দিস আর দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্লোইং রিভার্স সম but many are the east flowing rivers. Okay, next one. So most of the rivers of peninsular India originate in the western ghats and flow towards Bay of Bengal. पाखापाखि अधिक साउथर्न इंडिया जो बनले western घाट बाहरले and they okay flow towards the Bay of Bengal. Were clear? Next one, the next heading, that is the Himalayan rivers. Okay, the Himalayan rivers, the major Himalayan rivers are the Indus, Ganga and Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. एक large river, also these are having the tributaries, important tributaries अच्छे माना बाकरे. A river along with its tributaries may be called a river system. River ता सत्तो जोड़ा tributary उड़ा कासला generally ताको river system को distributed से लोच. Okay, the Indus river system. What बुझिबा? Indus river आसला. Okay, here is the Indus river. Indus river originated को प्लेस रु ना तिब्बत रे गोटे प्लेस अछि जोडा कैलाश माउंटेन पाखरे अछि कैलाश माउंटेन पाखरे अछि प्लेस से दैट इज मानव सरोवर लेक ओके मानव सरोवर लेक इन तिब्बत रे मानव सरोवर प्लेस रु बा लेक गोटा तयारी हिची एंड इट फ्लोज वेस्टवर्ड फ्लो करछि इंडिया रा लद्दाख रे जाइछि दिस रीजन इज द पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर and it enters into Pakistan entry करछि and it flows up to and falls at Karachi. Okay, जो place रे fall हेछि पडिछि कोठी पडिछि ना अरबियन सी रे पडिछि that is Karachi. Okay, देखिए बुक रे जाछि से मेंशन करछि. Okay, चैप्टर कवर करियर अछि. The river Indus rises in Tibet near Lake Manasarovar शेष flowing west it enters India in the Ladakh. तो लद्दाख रीजन में इंडिया रे आसी एंट्री करछि. Next one, okay, it forms a picturesque gorge in this part. Ladakh रो जो पार्ट अछि माउंटेन रीजन अछि हायर हिमालयन माउंटेन्स अछि so it forms okay picturesque ट्रांसलेट that is the beautiful landscape. Okay, जोडा tourism attractive place बेले भी परियो gorge जोडा फॉर्म होछि. Next one, several tributaries like Jaskar, the Nubra, the Shok and the Hunja. चारिटा में distributed tributary किसी मिली हुई थी. Because the first one in India also there is the presence of Jaskar. Okay, Jaskar Indus जोड़ा tributary गुड़ा कसला चारिटा असला. First one the Jaskar, then the Nubra, then okay Jaskar 1, then 2 that is the Nubra, then third that is the Shok. Okay, and the fourth one that is the fourth one that is Hunja. Okay, clear? So this is Hunja. So there are 4 tributaries of Indus. Okay, first one Jaskar, Nubra, Syok and Hunja. What very clear. Okay, next one. Next one, join in the Kashmir region. ये region उड़ा generally ये river उड़ा Kashmir region में join है जी. Okay, the Indus flows through Baltistan and Gilgit region and emerges from the mountains at Attock. Indus flow करिछि. Okay, Baltistan दीटा प्लेस आसला गोटेला Baltistan. Okay, and so Gilgit इंडिया रे जो प्रेजेंट अछि जो प्लेस उडाक पीओके पाखा पाखी जागा रे. So Baltistan और Gilgit एरिया रे कवर करिछि and emerges from the mountains at Attock. जो माउंटेन नु बाहर आसी से प्लेस उडा अटैक कला नियर अबाउट पाकिस्तान पाखा पाखी जागा रे सेटा माउंटेन नु खसिछि प्लेन लैंड रे गेछि और एबा प्लेन लैंड फॉर्म करिछि. Next one, there are 4 other rivers those joined to Indus. Okay, first one like okay the Satluj, Beas, Ravi, Chenab, Jhelum. They join together to enter the Indus River at Mithankot in Pakistan. Okay, so here there are the rivers like first one Jhelum,
Okay, Jhelum, sorry, the first one in India, Punjab, that is the Satluj or Satluj. Next one, that is Beas, Satluj, Beas, Ravi, then Chenab. Okay, Chenab, and next one, that is Jhelum. Next one, that is Jhelum. They all together, okay, joins to Indus at Mithanpur in Pakistan. मिथानकोट रे समस्त आसी पाकिस्तान जॉइन हेछन से प्लेस रे ओके सब जगह ट्रिब्यूटरी गुडा इंडिया रो अवश्य जाई सब जगह व्हाट बुझिला झेलम जो प्लेस आसला झेलम आसला सॉरी सतलज जो प्लेस आसला सतलज जेठी को आसला गोटे डैम बड़ो डैम हेछि से डैम आसला ममकेटी एठी गोटे डैम अछि पंजाब आउरला हिमाचल प्रदेश भितर गोटे डैम अछि ए डैम जो गोटे बड़ो रिजर्वर फॉर्म अछि ओके द रिजर्वर इज नेम्ड एज गुरु गोविंद सागर रिजर्वर एठी गोटे रिजर्वर अछि जोटा हम कहले गुरु गोविंद सागर रिजर्वर ममकेटी के सतलज जो प्लेस आसला गोटे बड़ो रिजर्वर अछि को डैम तयारी अछि आंसर आसला भाकरा नंगल डैम ओके जो डैम आसला दैट इज कॉल्ड एज भाकरा नंगल डैम आसला ओके आ ताजु कहि ना गोटे डैम फॉर्म सॉरी हमर जो सतलज रिवर आसला भाकरा नंगल आसला भाकरा प्रेजेंट पंजाब रे नंगल प्रेजेंट अछि कोठे पर ना हिमाचल प्रदेश प्रेजेंट अछि ओके एंड हियर द रिजर्वर फॉर्म से डैम तो गोटे रिजर्वर फॉर्म अछि ताको बोले गुरु गोविंद सागर रिजर्वर ओके गोविंद सागर रिजर्वर फॉर्म अछि और क्लियर नेक्स्ट वन so beyond this the Indus flows southwards eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi southward east side je east of Karachi re fall je the Indus plain has a very gentle slope Indus plain जो एरिया आसला जोटा प्लेन आसला पाकिस्तान पाखा पाखी एरिया अछि Indus plain गोटे gentle slope अछि that is plain is a very plain area it has a gentle slope severe slope that will be a slanting slope जदि severe slope आसला एटा slanting होबो gentle slope that means slope रे heavier slopes nahi okay slow slopes that means it is very plain okay so the Indus plain has a very gentle slope with a total length of 2900 km Indus river length asla kete na 2900 km of length Indus river next one that the Indus is one of the longest rivers in the world or of the world too okay here a little over a third of the Indus river okay river basin is located in India in Ladakh Jammu Kashmir Himachal Pradesh Punjab and the rest in Pakistan ଆମେ जो रिवर बेसिन कथा बोलते रिवर रे हम रिवर सिस्टम आन के रिवर सिस्टम रो रिवर जति सिस्टम गुडा जो रिवर सब गला ट्रिब्यूटरी हो बा मेन चैनल हो ये सब जति भी एरिया कवर कला ताको गले रिवर बेसिन कहले ओके द ए थर्ड ऑफ इंडस रो जो बिजनेस तार वन थर्ड एक्चुअली कवर होछ कोडी ने इंडिया रे जति पार्ट होछ सेटा होछ वन थर्ड पार्ट एटा कवर होछ द टू थर्ड ओके हियर प्रेजेंट इन पाकिस्तान में पाखापाखि टू थर्ड प्रेजेंट अच्छी 60 to 70% एरिया प्रेजेंट अच्छी पाकिस्तान में ओके नेक्स्ट वन what clear according to the regulations of the Indus Water Treaty of 1960 Indus Water Treaty la India can use only 20% of the total water carried by Indus river system this water is used for irrigation in Punjab Haryana and southern and western part of Rajasthan तेणु इंडिया ओनली 20% रो वाटर यूज करिवो इंडस ट्रीटी अनुसार केबेला द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960 रेला इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विल यूज ओनली 20% ऑफ इट्स वाटर एंड जो एरिया गुडा आसला पंजाब आसला हरियाणा आसला साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से एरिया रे इरिगेशन वाटर हेल्प करेबो तार जो गुरु गोविंद सागर जो रिजर्वर अछि जो गुरु गोविंद सागर रिजर्वर अछि से रिजर्वर में कैनाल आसी दैट कैनाल इज द लार्जेस्ट कैनाल इन इंडिया इंडिया सब बड़ कैनाल आसला दैट इज नेम्ड एज अपन कहले कोन दिस इज इंदिरा गांधी कैनाल ओके इंदिरा गांधी कैनाल और कैनाल ओके एंड दिस कैनाल एटा मन रखिदेला अपन समस्त ओके हम जो कैनाल आसला एटा जो इंदिरा गांधी कैनाल आसला कोड फॉर्म इतला कोड आसीसी ना गुरु गोविंद सागर रिजर्वर आसी ओके भाकरा नगर डैम पाखरो व्हाट क्लियर होला ओके सो इरिगेशन वाटर हेल्प करू नेक्स्ट आसा तो रिवर सिस्टम दैट इज गंगा The headwaters of the Ganga called the Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda and Devprayag in Uttarakhand. What are the headwaters of Ganga?
गंगा जो क्रिएट ହେଇଛି okay there is especially a glacier named as the Gangotri glacier okay Gangotri glacier and from Gangotri the river named as Bhagirathi the river named as Bhagirathi arise करछि Bhagirathi mixes or added with Alakananda at okay at Dev Prayag okay at Dev Prayag who place रे ହେଇछि ना सुछि देव प्रयाग ने उत्तराखंड देव प्रयाग जो प्लेस अछि सेठी भागीरथी अलकानंदा मिसिछि ता पर गंगा फॉर्म होछि गंगा फॉर्म होला पर सुछि गंगाटा जदे मेन लैंड को जदे माउंटेन छाड़ी की जो प्लेन लैंड को आसीछि सेटा को प्लेस रे आसी आंसर होला ए पॉइंट मन के बुक रे अछि देव प्रयाग बुक रे अछि देव प्रयाग को प्लेस आसला कोटा आंसर आसला गंगोत्री ग्लेशियर बाहरला पर भागीरथी रिवर आउट अलकानंदा रिवर ए दुटा रिवर जो मिसिछि जो प्लेस जॉइनिंग प्लेस आसला ताकल को कहले दैट इज कॉल्ड एज द देव प्रयाग से प्लेस वाला देव प्रयाग दिना एका देछि सेटा उत्तराखंड प्रेजेंट अछि आल्सो हरिद्वार ओके हरिद्वार रे कौन मन थे ना गंगा रिवर का प्लेन लैंड रे ठीक अछि ओके इट हैज बीन एंटर्ड इनटू द प्लेन लैंड एट हरिद्वार प्लेस रे हरिद्वार रे उत्तराखंड रे अछि ओके हरिद्वार आल्सो प्रेजेंट इन उत्तराखंड और क्लियर नेक्स्ट सिटी passes to पूरी पास है जेटा आंसर जो डेटा पास है सेटा होचे उत्तर प्रदेश देन बिहार मेन चैनलटा उत्तर प्रदेश और बिहार दे जायछि तापर वेस्ट बंगाल इट एक्चुअली डिवाइड है दिटा पार्ट डिवाइड है तापर पढिबा ओके सो नेक्स्ट पर आसला दैट दुटा एक्चुअली रिवर गंगा आसला ता साइड पैरेलल रिवर जाय जोटा सब बड़ रिवर गोटा आसला तार ट्रिब्यूटरी आसला दैट इज यमुना having a length of 1376 kilometer here this Ganga okay flows through Bangladesh also it has a length of okay river Ganga okay I am erasing it erase korchi okay so this is Ganga river Ganga has a length of 2500 kilometer that is in India okay not full in India but in Bangladesh also okay added जब हम add korchi ताल 2500 kilometer रो एटा बाकी distance cover करूची okay Yamuna here has 576 kilometer of length but clear and here Yamuna added with गंगा को यमुना जो आड़ है सेटा उत्तर प्रदेश वाला प्लेस आसा दैट इज ओके इलाहाबाद और प्रयागराज ओके दैट इज इलाहाबाद और प्रयागराज और इलाहाबाद ओके ये वर्ड हम जानछे दिस इज इलाहाबाद और प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश से प्लेस अछि जोठी यमुना और गंगा दिना इकट्ठी है बाय मिक्स है पर बुझिला नेक्स्ट वन ओके the hair waters of Ganga called as Bhagirathi fed by the Gangotri glacier that originates fed by that means water asuchi karu na Gangotri glacier water asuchi ka tu and joined by Alkananda and then Prayag in Uttarakhand and on the middle two video दिखला the mountain भीतर उत्तराखंड रे गुडा सा भागीरथी रिवर आसला गुडा सा का स्लाबर अलकानंदा रिवर आसला दिडा जे प्रायर मिसिछि सेटा विजिटिंग प्लेस एटा और आल्सो सैक्रेड प्लेस फॉर हिंदुइज्म बा हिंदू फॉलोअर मानको एटा सैक्रेड प्लेस आसला दैट इज देव प्रयाग आसला इधर लिखला दिडा रिवर माउंटेन रो गॉर्जियस भीतर जो फॉर्म होछि उधर की मडी वाटर आछि और फिर क्लियर वाटर आछि सेटा होछि कासला आछि भागीरथी अलकानंदा ओके एट हरिद्वार द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑनटू द प्लेन्स तो माउंटेन रो जेते को प्लेन लैंड आछि सेटा होछि हरिद्वार अछि उत्तराखंड रे और बुझिला फिगर अच्छा फिगर को 100% स्टडी करिया पड़िबो ओके नेक्स्ट वन द गंगा इज joined by many tributaries from the Himalayas different tributaries is monothetic a few of them being major rivers such as Yamuna the Bhadra the Gandak the Kosi अब जाते भले देखो छे then here okay then Ganga having the direction plus this যদি ইয়ার डायरेक्शन अछि तार ए जो साइड जोडा सब ट्रिब्यूटरी गुडा जोडा वाटर देछि तापर हम एक्चुअली कोन बोलछे मन के दिके these are called as the left bank tributaries okay these are the left bank tributaries and here the different direction move kala then these are the right bank tributaries okay the left bank tributaries of Ganga okay first one we can say Bhagirathi then Alkananda then Sarda okay this is Sarda next one here the Sarda okay Sarda river next one Ghagra one of the larger river after Yamuna this is Ghagra okay Ghagra next one in Bihar dita places dita rivers gotla Gandak river eta Gandak okay next one Kosi okay book रे अछि book रो follow कर देबे और बुझिला दी so Sarda जोटा गंगा आसला ट्रिब्यूटरी okay first one
व्हाट इज बुझेला ओके फर्स्ट वन द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ओके भागीरथी अलकानंदा हियर हियर शारदा घाघर और घाघरा शारदा घाघर देन गंडक देन कोसी ओके दिस इज घाघरा दिस इज शारदा और बुझेला दिस आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वेयर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ना दीटा रिवर अछि गोटला बडला यमुना देन अनदर रिवर देयर ओके another river there this is Yamuna and okay this is another river named as the Son river okay Son river and okay Yamuna these are the right bank tributaries whereas the left bank tributaries are Bhagirathi Alaknanda then Sarda then okay Sarda then Ghagra Gandaka and Kosi okay next on the river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalaya कोठू तयारी छेटा ना सोस गंगा आसला इंडस आसला एमन सब तिब्बत फॉर्म इट आछंदी बट यमुना जो आसला यमुना कम्स फ्रॉम इंडिया इंडिया रे इट हैज यमुनोत्री ग्लेशियर आस ओके यमुनोत्री ग्लेशियर आस उत्तराखंड रे नेक्स्ट वन इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा रिवर and as a right bank tributary leads the Ganga at Allahabad okay Allahabad place रे right bank tributary Allahabad place रे डेटा देछि गंगा यमुना आउटे कहते माइथोलॉजी रे हमरो आउटे रिवर आसला दैट इज कॉल्ड एज सरस्वती ए तीनटा रिवर आगु त्रिवेणी बोली कहला त्रिवेणी मींस होती थ्री रिवर्स जो मीटिंग प्लेस आसला से त्रिवेणी संगम बोली कहला जोठी कोन होची ना प्रयागराज जो प्लेस आसला से कोन होची आसला कुंभ मेला रे सुनता उत्तर प्रदेश कुंभ मेला आसला प्रति 12 वर्ष थरो हुए कारण कुंभ मेला जो प्लेस आसला सेडा जो प्रयागराज आसला द सैक्रेड मोस्ट सैक्रेड प्लेस ऑफ इंडिया इंडिया रा आउट होती प्रयागराज तीर्थंकर भीतर राजा जी सेवा प्रयागराज से नेक्स्ट वन ओके सो द घाघरा गंडक कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय हम पढ़ी जानो नेपाल हिमालय जो पार्ट आसला सेठी सब जगह छै टोटल शारदा घाघरा गंडक कोसी दिस राइज इन द नेपाल हिमालय ता देखाउछि देन नेपाल हिमालय जानि छै आगु पुलुआ के पछु जिवा जे एटा कसला अपन काश्मीर हिमालय कहले कोडुर पंजाब हिमालय कहले एटा पंजाब हिमालय आसला देन आसला उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पाखाउडी जिला आसला अपन कुमाऊं हिमालय कहले तापर आसला नेपाल हिमालय कहले तापर आसला आसाम हिमालय कहले आसाम हिमालय जोटा देखाउ सेटा जो ब्रह्मपुत्र ताको हम चाइना रे कहले बा चाइना रे चाइनीज लैंग्वेज एटा जो ब्रह्मपुत्र आसला ताको कहले सांगपो हम पढ़िया ठीक ओके सो there are the rivers which flood parts of the northern plains every year they flood the parts of the northern plain every year flood कराउची बा flood होउची तान से माने से रिवर रा क्रिएट कराउचंदी and causing widespread damage to life and property whereas they enrich the soil life property damage होउची ठीक अछि भूल अछि but life property damage होउची but they enrich the soil for agriculture use agriculture की बेटर हेई चलची जते silt हला sand हला clay हला humus deposition regularly हेई चलची okay next one the main tributaries which come from the peninsula of जो tributary आसी okay and the Chambal बेटुआ and the Son इत्यादि छोटे कथा बुझिला okay that here Yamuna has its right Yamuna also flows towards east here has its okay four of the tributaries namely first one the largest that is the Chambal then the second one okay Chambal Sindh Betua okay and next one Ken okay these are the four tributaries of Yamuna okay here Yamuna and the river so they also are their water okay as the right bank tributary to Ganga से वाटर दोचंदी किंतु राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से जाउछ बट यमुना रो पासला यमुना रो चारिटा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आसला चंबल सिंध बेटुआ केन ओके क्लियर नेक्स्ट वन सो these arise from okay the semi arid areas have shorter courses do not carry much water in them okay so कोड लागला माने एमसे सेमी एरिड जो रीजन उडा आसला these are the dry regions आगला राजस्थान वाला मध्य प्रदेश वाला जो रीजन उडा आसला dry regions को ताको में semi arid को ओके semi arid region not fully arid or fully dry but these are semi dry regions ए कसला जो मिडिल हाईलैंड अछि से हाईलैंड रो सब बाहरी गले सेते वाटर कैरी करी नोनांती वर्षला the Namami Ganga project of the program is an integrated conservation mission target कसला Namami Ganga project आसला जो प्रोजेक्ट
Okay, integrated conservation mission এটা approved as a flagship program by the union government or central government, okay, in June 2014, okay, to accomplish the two objectives of effective abatement of pollution. कौन कराबो ना pollution को प्रिवेंट करया पाई फास्ट बामटी पूर्व पड़िया थी जो pollution पे इंडिया गवर्नमेंट जो फास्ट स्टेप मिला गंगा को pollution फ्री करया पाई that is in 1985 रे प्रोजेक्ट आसला that is called as गंगा, okay, गंगा action plan. Ganga action plan was launched in 1985 by the central government of India to pollute free or to make it pollution free. गंगा को pollution free करया पे फर्स्ट प्रोग्राम रहला सेटा होची गंगा action plan. सेकंड रे जो प्रोजेक्ट निया गला सेटा होची नमामि गंगे, ओके, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम निया गला एटा केबे सैंक्शन करा लेगा इन जून 2014, ओके, जून 2014 याको सैंक्शन करा गला बा इंडियन गवर्नमेंट को ଗୋଟେ फ्लैगशिप प्रोग्राम वगैरह लिया फ्लैगशिप प्रोग्राम जो प्रोग्राम टा कंटीन्यूअस होबो एंड इन रैपिड पेस रहबो, ओके. नेक्स्ट वन enlarge with the waters, that means having a huge amount of water by those numerous number of tributaries. बहुत tributary पड़े आसला water sufficient आसला गंगा रे. गंगा became the largest river, having the largest river basin समुद्र पड़े आसला. The Ganga now flows, okay, enlarge with the waters from its right and left hand tributaries. The Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal. West Bengal में फरक्का पर्यंत पहुंचला मन के ठीक है. वेस्ट बंगाल फरका प्लेस पर्यंत पहुंचली फरका प्लेस पर्यंत पहुंचला फरका प्लेस से पहुंचला परे आसला दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा और गंगा डेल्टा द रिवर बाइफर्केट्स हियर रिवर एटू दुटा पार्ट रे डिवाइड हिचे गोटेला भागीरथी हुगली as a tributary flows southwards, okay, through the deltaic plains to the Bay of Bengal. मन के ठीक एटू रिवर हुगली क्रिएट हिचे हुगली परे कलकत्ता जो प्लेस अछि सेठी गोटे कोन हमरो गोटे कलकत्ता पर गोटे ब्रिज अछि हुगली रिवर पर ब्रिज अछि ताको हावड़ा ब्रिज कोचे जोटा ब्रिटिश अवश्य तयारी करथिले एबे से टेक्नोलॉजी आयरन पिलर पर सॉरी नो पिलर बोलते किछ नाही ताको हैंगिंग ब्रिज को आछि झुलंता पोल बोली को आछि एटा अछि हुगली रिवर पर अछि, ओके, रिवर हुगली पर अछि. हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा. गंगा रे डिस्ट्रीब्यूटरीटा को प्लेस रो अलगा आला आसला फरका प्लेस रो अलगा आला फरका इन वेस्ट बंगाल अलगा आला दुटा पार्ट रे डिवाइड होला गोटेला भागीरथी हुगली रिवर को कहला भागीरथी दिन कहला से गंगा नेम टा भागीरथी भी कहा जाए. सो भागीरथी हुगली रिवर दैट ना बाइफर्केट करले दुटा पार्ट रे डिवाइड होला आसला गोटे वेस्ट बंगाल ने कलकत्ता देकी फॉल होला बे ऑफ बंगाल ने नेक्स्ट पार्ट दैट मूव टू थ्रू बांग्लादेश तो तापरटा बांग्लादेश रे एंट्री कला आउ टिके कथा आसला जब बांग्लादेश रे एंट्री कला नाउ this particular Ganga river in Bangladesh, okay, in Bangladesh it is called as Padma, okay, Bangladesh river को कहला पद्मा कहला. ये this river ए जो river हम देखुचे आका कहले चाइना रे कहले सांगपो लेंथ हला केते ना 2905 किलोमीटर आका आसाम रे बा इंडिया तक कहले ब्रह्मपुत्र, this is called as ब्रह्मपुत्र, okay. And here in Arunachal Pradesh, it is named as, okay, it is named as Dihang. It is named as Dihang or Dibang. What bujhela? Next one, okay. So here Brahmaputra when enters to Bangladesh, it is named as, okay, Jamuna. Bangladesh ta kon kahala Jamuna kahala dita badle ekati hegale mix hele taku kahala Meghna. जेतले मिंगल hele ekati hegale सेटल कहला मेघना तो मेघना फॉल होला फाइनली बे ऑफ बंगाल फॉल होला. व्हाट बुझिला? नेक्स्ट वन, ओके. सो द रिवर बाइफर्केट्स द भागीरथी हुगली as a distributed flows southwards through the deltaic plains to the Bay of Bengal. deltaic plain देखि Bay of Bengal आसी फॉल होला. नेक्स्ट वन आसला द मेन स्ट्रीम दैट फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश. जो मेन स्ट्रीम टा गला सेटा साउथवर्ड आउट गला कोडी गला बांग्लादेश एंट्री गला. नेक्स्ट वन जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र जॉइन फर्दर डाउन स्ट्रीम गला परे इट इज नोन एज मेघना. डाउन स्ट्रीम गला परे गला मेघना गला कोडा ना जॉइन गला परे डाउन स्ट्रीम मेघना गला ता पूर्व पद्मा आउ गला जमुना. ओके, सो जॉइन गला परे मन किले मिक्स गला परे मेघना एमएम इंडी मन किदो एमएम
मिक्स मेघना कोटा कोटा मिक्स है ना गोटे ला गंगा ओके और गोटे ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश एकाठी पर बाला मेघना मेघना की पड़े बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल ओके and they flows into Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as the Sundarban Delta. Sundarban Delta, हम Sundarban Delta कहीं कोचा में जाने चाहिए ठीक है. The Sundarban Delta is derived from its name from the Sundari tree. सेठी जो tree वाला देखा था कोई Sundari tree कोचा. Okay, which grows well in marshland. Marshland जोड़ा कसला. Those are the wetlands having mud. Mud बा कादुओ थी वो. मार्श कहले संत संख्या बा ओदा जागा जोटी कौन होइछि ना जो ट्री गुडा के फॉर्म होछि ओके दीज ट्रीज आर ऑफ द टाइडल फॉरेस्ट से ट्री गुडा का जुआरिया अरण्यर वृक्ष गुडा को बा ट्री गुडा को टाइडल फॉरेस्ट रो ओके एंड दीज ट्रीज स्पेशली नेम्ड एज द सुंदरी ट्री ताको सुंदरी ट्री कहले से सुंदरबन डेल्टा ताको नेम करा गला इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा सो इट वाज सॉरी इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड वर्ल्ड सबसे बड़ा डेल्टा आसला also the fastest growing delta और इटा बड़ी बड़ी चलछि it is also home to the royal bengal tiger किंतु royal bengal tiger देखाउछन सेठी ओटे सुंदरबन ओटे वाइल्डलाइफ सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व कराइ सेठी द बायोस्फीयर रिजर्व अछि जोटा कि स्पेशली होम टू द ओके रॉयल बेंगल टाइगर ओके व्हाट क्लियर होला नेक्स्ट वन ओके द लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज ओवर 2500 किलोमीटर ओके and here Ambala is located on the water divide between Indus and the Ganga river system दिला एक प्लेस आसला जोटा गंगा आसला गंगार रिवर सिस्टम आसला इडाला इंडस रिवर सिस्टम आसला इठी जो वाटर डिवाइड रहला ओके दिस प्लेस इज नेम्ड एज अंबाला आपण कोन कहले दिस इज नेम्ड एज अंबाला इडा जो अंबाला आसला द वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा रिवर एंड द इंडस रिवर इज नोन एज अंबाला व्हाट क्लियर नेक्स्ट वन सो द फ्लेम्स फ्रॉम अंबाला to the Sundarban stretch over nearly 1800 km. The plain from Ambala near Haridwar, okay. The plain from Ambala to the Sundarban Delta that stretches over 800 km. 1800 km. Quite clear. So this stretches over, okay. This plain stretches over. This is Ganga, okay. 1800 km. That 1800 km that stretch is 800. What बुझिला? Next one, but the fall in its slope is hardly 300 meters. So कुछ असला ना length असला ना from the slope in higher region रो by the plane असला हरिद्वार बाका बाकी जाने plane असला सेठू पर्यंत असला ये जो 1800 किलोमीटर जो length अछि तार भितर जो slope अछि से slope रो total slanting केते ना slope रो slanting कोन आसा से जोटा upper course अछि जो अंबाला place असला मगर आउट प्लेस हम नहीं आउट प्लेस नहीं बोले दैट इज कोनो प्लेस आसला से प्लेस होछ कोनो प्लेस आसला सुंदरबन डेल्टा आसला ए जो दीटा प्लेस भीतर जो स्लोप अछि जे दैट इज नॉट ए हायर स्लोप एटा एडा बडो स्लोप इन जनरल सांघाटिक स्लोप नो बोदे ओके स्लो स्लैंटिंग्स अछि तो स्लैंटिंग कम अछि ओके सो दिस इज ए स्लैंट ए जो स्लैंटिंग अछि एटा वेरी स्लो अछि दैट इज ओनली 300 मीटर हाइट डिफरेंस अछि ए हाइट ला हम जानछो मनोटा 300 मीटर हैला ताले एटा 300 मीटर डिफरेंस रे ए प्लेन अछि दैट मींस जो स्लोप अछि से स्लोप वेरी स्लो आसला तो केते स्लो होला लिखाला से दैट इन अदर वर्ड्स हियर द फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर आफ्टर 6 किलोमीटर गला पर मात्र 1 मीटर डेप्थ कमुची गोटे मीटर डिफरेंस होची डेवलप 6 तब 6 मीटर पर 6 किलोमीटर पर हाइट और हाइट में डिफरेंस 1 मीटर मात्र 1 मीटर ओके नेक्स्ट वन सो इट हैज मसला आर कोन से सेठी बड़ आर प्लेन एरिया अधिक अछि therefore the river develops large meanders सेठी में कहै छै ना जते स्लोप अधिक बा सॉरी स्लोप जेते कमी गला सेटा को अधिक रिवर ता सॉफ्ट सॉइल एटा एंट्री करिवो कारण रिवर स्पीड एटी स्लो हे गला से जो रिवर कोन थ्रू करिवोनी एटा को स्लो फॉर्म करिवो से जो meander फॉर्म हो वाल बुझला द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ओके हियर द ब्रह्मपुत्र ओके arises from two place नु ना से मानव सरोवर बाखा प्लेस नु तिब्बत थ्रू तयारी हेछि that is in China called as Sangpo having length little longer than Indus that is 2905 km next when it enters in okay two place entry करछि आसासला आसाम रे एंट्री करछि ताको सॉरी अरुणाचल प्रदेश रे बेल्ट रे एंट्री करछि से बेल्ट रे जाको दिहांग और दिबांग रिवर का हला सेठी जो बड़ गॉड सब फॉर्म हेछि से गॉड को हला दिहांग गॉड और दिबांग गॉड आल्सो
found in Arunachal Pradesh. What clear? Next one, the Brahmaputra entry करছে आसाम रे. Okay, Brahmaputra in India, it is the widest river. ब्रह्मपुत्र ସବୁଠୁ ଅଛି ଆସିଲା ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯୋଉ ରିଭର ଦେଖୁଛେ ତାର ଯୋଉ ୱିଡଥ ଅଛି এই ୱିଡଥ ଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆସାମ ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି କେତେ ନା 29 କିଲୋମିଟର ୱିଡଥ ଅଛି ୱିଡଥ କେବଳ ଅଛି 29 କିଲୋମିଟର ୱିଡଥ ଅଛି ଓସାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଥି ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଇଛି ଓକେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଇଛି ରିଭର ଭିତରେ ଗୋଟେ island form is okay in Brahmaputra and this island is named as this island is actually called as the river bhitar jota formula takon kali riverine island kali okay riverine island and here the riverine island is named as Majuli okay this is Majuli present in Assam re Majuli present अछि jota hochi world ro largest riverine island taku bada riverine island au nai okay next one okay so jaha likha hai padhi ke jiba okay first one the Brahmaputra lies in Tibet east of Mansarovar lake very close to the sources of Indus and the Satluj it is slightly longer than Indus alko longer kete na 5 km matra longer achi next one most of its coast lies outside India tar most of the coast of India bahar achi को कंट्री प्रेजेंट आसला नेपाल ऊपर है नेपाल भी पास करनी आसला चाइना ये सब जगह नेक्स्ट वाला आसला ओके चाइना एंड आल्सो तिब्बत तो चाइना क्लेम करू छ निजर बोली ना यदि फ्लोज ईस्ट टुवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयज इन जाई छी इंडिया ब्रह्मपुत्र भी जाई छी और रीचिंग द नामचा बोरला ओके नामचा बोरला हाइट आसला 7757 मीटर आसला नामचा बोरला ए प्लेस रो सब मथे इंडिया रो आसला ना फोर्थ टॉलेस्ट आसला नामचा बोरला 7735 और 37 किलोमीटर ऑफ हाइट सॉरी मीटर ऑफ हाइट 57 है नामचावरा जो प्लेस आसा सेटुटा बेंड है छै यदि मन के दियो सॉल रीचिंग नामचावरा इन अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल पाखे पहुंचला परे इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया ओके यू टर्न देला इंडिया एंट्री कला इन अरुणाचल प्रदेश और थ्रू अरुणाचल प्रदेश ओके थ्रू ए गॉज हियर इट इज कॉल्ड एज द दिहांग